Uh, Good morning, student. Our today's topic is on refraction of light through a glass prism. When a ray of light passes through a glass prism, refraction or bending of light occurs both when it enters the prism as well as when it leaves the prism. जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस वी हैव टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस फर्स्ट वन इज PQ and second one is PR. It is of prism are not parallel, therefore the emergent ray and the incident ray are not parallel to one another. Okay, now let's see incident ray AB that strikes on the first surface of a glass prism. We draw a normal on that. It will bend towards the base of the prism. Now again it refracted back to the air. The light ray first comes into air rarer medium, then it goes into denser, and again it comes back to rarer medium. So incident ray or ray which enters in the prism. Now the emergent ray, and when we extended the incident ray, the angle between the incident ray and the emergent ray is known as the angle of deviation. Now we will going to see some top parts of it. In refraction through a glass slab, the emergent ray is parallel to incident ray. But in refraction through a prism, the emergent ray is not parallel to the incident ray because the opposite faces of the prism where refraction takes place are not parallel to each other. That is when we see in the above diagram, that is PQ and PR are not parallel to each other. That is why the incident ray and the emergent ray are not parallel to each other. And one more, when a ray of light passes through a prism, it bends towards the base of the prism or towards the thicker part of the prism. One more, the angle of incident ray and emergent ray is called the angle of deviation. Now we will move towards dispersion of light through a prism. Now we are going to see Newton's experiment of dispersion of light. Sir Isaac Newton, while studying the images of heavenly body formed by a lens, found that the images were colored at the edges. जब सर इज़ैक न्यूटन स्टडी कर रहे थे हेवनली बॉडीज मींस प्लैनेट्स एंड स्टार्स एंड सबकी, तो इन्होंने देखा कि ये जो एजेस पे हैं ये कलर्ड हैं. In 1665 to investigate this he performs an experiment using a prism. इन्होंने एक्सपेरिमेंट यूज़ किया प्रिज्म को लेते हुए. न्यूटन darkened his room at Trinity College, Cambridge, and allowed a beam of sunlight to pass through a small circular hole in the shutter, forming a circular patch on the opposite wall. He then placed a triangular prism in path of the beam of light and observed that white light had split into 7 colors, and that 7 colors resembled the colors of a rainbow, namely violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. That we all know that Vibgyor pattern. उन्होंने क्या किया, एक होल किया, अपने कमरे को अंधेरा किया, एक होल किया, देखा लाइट का जब पार्ट ट्रेस किया तो देखा जगह वो बना रही, तो फिर उन्होंने एक प्रिज्म रखा वहाँ पे, एंड देन ही सॉ that the light is dispersed into splits into its 7 colors, namely Vibgyor. Now the question rises, what is dispersion? The process of splitting of white light into its constituent colors when it passed through a transparent medium, or we can say prism or any transparent medium, is known as dispersion. The band of colors obtained due to dispersion of white light is referred to as spectrum. जो बैंड होता है कलर का डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से जो बनता है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम. We will discuss dispersion of white light by a glass prism. Dispersion of white light glass prism के through. Even though all colors of the visible spectrum travel with the same speed in vacuum, वैक्यूम में विजिबल स्पेक्ट्रम के जो भी कलर्स होते हैं वो सेम स्पीड में ट्रैवल करते हैं. द स्पीड ऑफ द कलर्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम वेरीज व्हेन दे पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास और वाटर. That is, the refractive index of glass is different for different colors. Vacuum में सबकी स्पीड सेम है, but when light travels in a transparent medium of its, then its speed changes. Like glass or in water, अलग अलग लाइट इंटेंसिटीज़ की स्पीड चेंज हो जाती है.
That is the refractive index of glass is different from different colors. तो refractive index इसीलिए ग्लास का जो होता है वो different colors के लिए different होता है. Now we will see dispersion of white light by a glass prism. हमने एक सनलाइट पास की प्रिज्म पे, और जब ये पास होगी तो ये अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में बढ़ जाएगी. रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट. Or we can say that Vibgyor pattern. When a polychromatic light, multicolored or light containing more than one wavelength, like white light, is incident on the first surface of the prism, it gets refracted. But each constituent of the white light gets refracted through a different angle, that is, white light get dispersed. When these colors are incident on the second surface of the prism and they again undergo refraction, they get refracted from a denser to a rarer medium and the colors are separated further. Thus, a beam of white light incident on a prism splits into its constituent colors to form a spectrum. Means कोई polychromatic light, जैसे कोई multicolored light हो, जैसे कि वाइट लाइट हम कंसिडर कर लेते हैं, अगर वो प्रिज्म के एक सरफेस पे पड़ती है वो रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2 सरफेस है प्रिज्म में, एक रिफ्रैक्शन होगा. देन इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं वाइट लाइट के वो अलग अलग एंगल पे बढ़ जाते हैं. बट वाइट लाइट गेट डिस्पर्स, दैट इज़ वाइट लाइट अलग अलग बढ़ जाती है. और जब ये कलर्स सेकेंड सरफेस से पास होते हैं, दैट इज़ फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू ए रेयर मीडियम, कलर जो है और ज़्यादा कलर सेपरेट हो जाते हैं और ए बीम ऑफ वाइट लाइट फॉर्म्स ए बैंड ऑफ पैटर्न, वो एक बैंड बना देती है. Each constituent of white light is deviated from the base of the prism. जो भी constituent है white light का वो base से उसके deviate होता है. Violet color suffers the maximum deviation while the red color suffers the minimum deviation. Violet color का जो deviation होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जो और white color का जो होता है वो सबसे कम होता है. The spectrum obtained is impure as the colors in the spectrum do not have any sharp boundaries. जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है वो इम्प्योर होता है क्योंकि ऐसी कोई शार्प बाउंड्रीज नहीं होती कि यहीं तक रेड रहेगा, यहीं तक ऑरेंज रहेगा. दैट इज द कलर्स मर्ज ग्रेजुअली इनटू द नेक्स्ट, मतलब एक दूसरे में वो मिले टाइप से रहते हैं, जैसे रेड ऑरेंज एक साथ लगेगा, वॉयलेट ब्लू इंडिगो, वॉयलेट और ब्लू इंडिगो के बीच में, और इंडिगो और ब्लू, इस टाइप से. मतलब कोई कलर मतलब एक डिफरेंट बाउंड्री नहीं डिसाइड होती है, कलर्स आर मर्ज्ड. Now, recomposition of a white light. In order to get white light from the dispersed light, the prism are arranged as shown in the diagram. Recombination of 7 colors of the dispersed white light to get white light is known as recomposition of white light. Means white lights हमने 7 कलर की बैंड बनाए, स्पेक्ट्रम बनाई, और फिर हम जो है वाइट लाइट दोबारा पाना चाहते हैं, वो कैसे होगा. जैसे कि हम एक प्रिज्म रखे, वी विल प्लेस ए प्रिज्म, एक वाइट लाइट गई प्रिज्म से, वो पास सफ़र की डेविएशन, आफ्टर पास हम एक स्क्रीन रखेंगे, हमें दिखेगा वहाँ पे 7 कलर है. नाउ वी विल रिमूव द स्क्रीन, दैट कंसिडर दैट प्रिज्म इज P1 एंड अलाउ a narrow beam of light to be incident on the prism. और जब ये डिस्पर्स्ड होगी तो 7 कलर्स में बटेगी, जो हम जानते हैं. हम इसको स्क्रीन पे ले लेंगे. ना अब स्क्रीन हटाते हैं, एक दूसरा प्रिज्म सेम मटेरियल का अपोजिट डायरेक्शन में करके रख देते हैं. नाउ वी विल सी व्हाट हैपन. और जब हम ऐसा करते हैं तो जो 7 कलर के स्पेक्ट्रम बैंड्स हैं वही एंटर करते हैं प्रिज्म में, और जब वो दोबारा रिफ्रैक्ट होंगे देन अ वाइट लाइट विल बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. मीन्स 2 प्रिज्म को रखना है, P1 P2. अगर हम एक प्रिज्म रखेंगे तो हमें बैंड ऑफ 7 कलर्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर दूसरा प्रिज्म हम अपोजिट डायरेक्शन में करके सेम मटेरियल का, याद रखना सेम मटेरियल का प्रिज्म होना चाहिए, रखेंगे और जब स्क्रीन लगाएंगे तो देन वी अगेन गेट द वाइट लाइट. नाउ वी विल सी फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो. द स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच रिमेन सस्पेंडेड इन एयर just after the rain acts like a rain prism. When sunlight passes through these drops of rainwater, it gets dispersed and we see 7 colors of rainbow. जो जब बारिश होती है तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आसमान में ही रुक जाते हैं, और जब सनलाइट इन पर पड़ती है तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म की तरीके से ही एक्ट करते हैं
और हम देखते हैं कि रेनबो का फॉर्मेशन हो रहा है, और आप भी देखो रेनबो में जो है कोई ऐसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पता नहीं चलती हैं। आगे, थैंक यू स्टूडेंट। इन द नेक्स्ट video we will going to see dispersion and scattering.